थैंक यू सर। अमित, अपने बारे में परिचय दीजिए थोड़ा सा। Sir, I am Amit Kumar Mishra. I have completed my basic education from my hometown Gopalganj. Thereafter, I have completed. माइक थोड़ा सा और पास करिए, थोड़ा सा माइक वॉइस थोड़ी सी और लाउड होनी चाहिए। Sir, I have completed my basic education from my hometown Gopalganj. Thereafter, I have completed my graduation from Patna University and LLB from Patna Law College. And after that, I have completed LLM from Central University of South Bihar. Presently, I am enrolled in Bihar State Bar Council and practicing. एलएलबी आपका किस ईयर में हुआ था? 2017 आपका 2017 जी। और मास्टर कब हुआ है आपका एलएलएम? 2020 2020 से फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस में हूँ पटना हाई कोर्ट में। प्रैक्टिस में किस तरीके की केस देखते हैं आप? मैं क्रिमिनल मैटर्स देखता हूँ। क्रिमिनल्स में अभी तक क्या क्या देखा है आपने? बेल, अपील, रिवीजन, क्रिमिनल मिसलेनियस एक्सेट्रा। बेल किन किन मामलों में कराए हैं अभी तक आप? सर, बेल मैं ये कह रहा हूँ कि बेल अभी तक आपने किन मामलों में कराया है? सर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल मैंने आईपीसी के कुछ ऑफेंसेज और certain offenses like including 300 minor offenses also there. Especially in the state of Bihar, there is flood of excise cases. I have done more excise cases. Under the Indian Penal Code, under what sections you have taken the bail? 302 and 379 property related offenses, simple disputes including the hurt and grievous hurt, robbery. Robbery also? Sir. Okay. So what is the robbery? Robbery is aggravated theft or extortion. Robbery is aggravated form of theft or extortion. theft. So what is the aggravated here? Here where instant hurt or injury is caused to the person when it converts into the instant fear of death, grievous hurt, etc. is there. So how it is distinguished from the extortion and robbery? Because this element is present in both offenses, according to you. Yes, sir. In extortion, there is not immediate threat, but in robbery, it is immediate threat to deliver then and there the property. So injury is the basic elements in a robbery. Fear, immediate fear. Immediate what kind of a fear? Fear of causing hurt, grievous hurt, death, etc. What is the basic difference between culpable homicide and murder? Basic, sir. What basic about? I don't know. I am asking to you.
Is there any difference between culpable homicide and murder? Culpable homicide and murder. Yes, there is difference between the two. The aggravated, the certainty is there in case of death. In case of murder, there is certainty of death, and its knowledge, degree of intention, degree of mens rea is greater than the culpable homicide. Culpable homicide is genus, and murder is its species. What is the degree of mens rea? Basically, degrees refer the mental capability of a person. Degree of mens rea refers the mental capability of a person. First degree, second degree, third degree, and fourth degree are the classification. Intention comes under first degree. Knowledge and recklessness, etc., comes under second degree. Now, knowledge comes under second degree. Recklessness comes under third degree. Negligence, etc., comes under fourth degree, as far I can recall. Yeah, Amit. Yes, sir. Yeah. Yeah. Why you want to become APO? Sir, I'm interested in legal fraternity. That's why I joined this advocacy. So far as APO is concerned, I'm practicing a private side. We're under we are under compulsion to win the case anyhow by hook or crook. If I will go through the prosecution side, I will have my duty just to assist the court to find the truth. I will not have such obligation to win the case anyhow. And further, it is as the private practice is result oriented and not duty oriented. I want to join because the profession is duty oriented. You just said the private practice is a result oriented, not the duty oriented. Please explain a bit more to this to me. You are getting my point? Yes, sir, I got it. I'm sorry, sir. I could not use the appropriate word there. I mean to say that it is duty as well as result oriented. What is difference? What is difference in private practice and the APO? The essential difference that I can feel is that in private practice, we are under compulsion to win the case anyhow. The future briefs depend upon our present performance. But in case of prosecution, each and every case has no link with previous or future cases. Though experience of the same will be useful in both the cycle. If I try to interpret or analyze your this line, then in private practice there is a requirement to win each and every case. Meaning that I was saying that in the APO there is no requirement to win each and every case. This you want to say? Yes, sir. I want to say this with certain modification, if you permit. Yes, modify it. Not in each and every case there is compulsion to win, but there is pressure to win from the parties. What is wrong in it? There is nothing wrong in it, but as the result is not under the control of the individual, and something which is dependent upon the result is sometimes penetrating. You just recall your statement again. It suggests that you are running away of your duty.
Just recall Sorry, this. sir. Sorry, sir, if my statement made some inference like that. The basic You thing see I want to, what other influence it may be. Tell me what other influence it may be. In the basic thing, private practice there is a pressure to win each and every case. In the government there is no pressure. What other influence you may draw out of this? Tell me. Why I should appoint or select a person as an APO who doesn't want the result? You yourself just said you don't want result. You are scared of the outcome of the case. yes, sir, the outcome of the case in prosecution is not under the control either in both the sides is not under the control either on the prosecution or the private practice. But so far, so far prosecution is concerned, the, the performance of duty is the main function, and result of it is not under the as a hurdle. Again, you are saying the same thing. You don't want to have a result. You don't want to be concerned with the result, isn't it? So the last part you mentioned that I don't want to concern with the result. This is the primary thing I want. Why not? If you are not Confined concerned with with, if you are not concerned with the result, why government should appoint a person who is not concerned with the result? Why? so results are not under the control of anyone. The Who's duties is saying? You just again listen the wordings. You yourself accepted. I don't want to be concerned with the result. You yes, yourself said. If a yes, sir. person who is not concerned with the result, why he need to be appointed as an APO? If you're not concerned with the result, will not work hard. Tell me an example of a person who is not concerned with the result, will work hard. Yesterday was India-Pakistan match. If the players are not concerned with the result, why they will not work hard? Sir, I would like to say that I just want to convey that the example of player is given that the player should just play, not to win. If they are playing to will be Where you got this line? Player has to win. In every motivational speeches, in every talk, player has to win. Even it has been said for the Pakistan, after 199 all out, you have to win. Already the prosecution has a very low conviction rate. If you go in the prosecution with this mindset, what will happen there? People win the races only out, people win the races will have the possible result only out of their own conviction. You are lacking conviction here, isn't it? sir, conviction is there. Conviction reflects from the performance of the duty, but so far the A result in person, concern. a person who has not a concern with the result, how he can perform the duty? Sir, concerned with the result and dependent on result, in my sense, both are different things. In private practice, the further future briefs are dependent, not only the concern. Again, you are saying the same thing. In the government, there is no pressure for performance. I will work or not, I will get the salary. So I want to join government service. In private practice, I have to perform every time. I will not get a job. Therefore, you are opting for APO because there is no pressure of performance. Kuch karu na karu, I will get the salary. No, Isn't sir. it? If this is the inference, I'm sorry for such inference. I'm But not infringing. I'm just telling what you have said. sir, I have said that performance of duty is mandatory in both the sectors. The honest performance of duty is present there. But so far as government sector is concerned, the APO is the Private private outcome. practice, private practice is such a lucrative or an interesting job. Why you want to leave this for APO? What is an APO? Nothing in APO. Very routine job is APO. Sir, the second pushing factor is that
the whenever on criminal side we represent the criminals, it sometimes shows to our conscience that we are helping those person who have done something wrong to the society. Therefore, sometimes it do not conscience do not allow to work for them. Your conscience is saying that don't do a private practice because you are helping to the wrongdoers. Yes, sir. I want to convey this. It means all the advocates who are doing the private practice are doing illegal work, unethical. No, sir. It's neither ethical, unethical, nor illegal. It means their conscience is not correct. They are lacking consciousness. Sir, I use the terminology sometimes, not always. Okay, okay. Which is your favorite topic, IPC, CRPC, Evidence Act? Favorite topic in all three subjects you mentioned. Okay, okay. If I will say you choose anyone, what will you choose? Evidence Act, sir. Evidence Act. Why? Because the entire case depend upon this basic thing, The evidence. evidence. How evidence has been developed in the society? The role of evidence, I think you are talking about. How the evidence has been developed in the society? Very simple question I'm asking. How evidence has been developed in the society? Evidence Act कैसे आया? The origin about the role of Yes, evidence. yes. The, to provide the reasonability to the decision, there need some circumstances or the facts which support the decision. In that very way, the role of evidence comes. When Evidence Act has been passed, Present Indian Evidence Act was passed in 1872. who is instrumental in that? Who is pioneer of this? Whose efforts has been taken the Evidence Act into existence? Before him, there was Sir Henry Mann, and on his work, the Lord Stephen worked on it and drafted this present. Sir James Fitzgibbons Stephen, Sir, what he did? he drafted the entire, he codified the prevailing and existing laws. What is the historical perspective of the Evidence Act? Sorry, sir, I'm unable to recall. Recently, Evidence Act has been changed. Yes, sir, government is trying to bring a new legislation. Trying to, or government has changed? It has not changed yet because the law has to be passed. It is under What is changed? consideration. What is changed there? What is changed in the old and new? Sorry, sir, I have not gone through it in detail. You are going to become a APO. You are practicing advocate. You are not aware of the change in the Evidence Act. I'm sorry, sir, I could not say. You just said some times back about the culpable homicide and murder. Why a difference has been created in these two? Why difference? Has been created in culpable homicide and murder. The differences between the two has been laid down just to distinguish the mental status, the offenders on the basis of their mental status. Okay. Thank you. Shaurya? Shaurya? Sir, pranam, sir. Yeah. हेलो अमित, प्रणाम। बताइए कि
what is your edge? What you think is your edge over your competition in this examination? Sorry, sir, I could not get what is what. I'm asking, what is your edge over your competition in your opinion? What are the attributes or what are the characteristics in which you think you are superior or a better claimant to this job than your competition? Sir, I think I am suitable for this job because I have completed the LLB as well as LLM in criminology, which is far more important for this sector. Further, I have some experience, a little experience in this field in advocacy. That will be also very much relevant if I will select it. One is qualification, second is experience. That is all. You do not think you have anything in your character or your commitment to be a better candidate than others? Yes, sir, I find myself suitable on the basis of the his honesty and devotion towards the duty. You think you are an honest person? Yes, sir, I think I'm honest to duty. All right. Why is honesty important to society? Why is it called a virtue? Honesty is the best policy, isn't it? That is what we say. Honesty is the best policy. Why it is the best policy? Because it provides the certainty to the acts, the conduct of individual, while a person who is not honest cannot be certain about the. I'm sorry, sir, I'm unable to frame my answer. That is all right. Is honesty existent everywhere as an innate feature of coexistence? Yes, sir, I believe that it exists. Acha, who or what actually inspired you to explore a career in law? Sir, the society itself has inspired me. I have seen the burden of cases since my childhood. In every newspaper, there is overburdenedness, and judicial activism was prominent during my school days. These things have inspired me to explore this area. Further, when I explored it, I realized that my skills are suitable to this field. Therefore, I. All right, all right. You believe that people have evolving viewpoints, dynamic thought process, and at a point in future, you may actually find that this was not the best decision that you took. Is it possible? Do you see a possibility that down the line, say couple of years after from here, or say 5 years down the line, you may also realize that law was not the best suited career for you? Is it a possibility? No, sir. As per my present experience and the Yeah, that's exposure what that I'm saying. That's what I'm saying. If 5 years down the line, is there a possibility that you may actually have to rethink the entire purpose of what you are doing on this planet? Is it possible? no, sir. In this field, I am very much interested, and the area which I am exploring is very much interesting. I don't think. Okay, fine. Interest. You have conviction. That is very good. So you said that you have interest in Indian Evidence Act. Yes, sir. Okay. Before that, you tell me, have you heard the term common law? Common law, yes, sir. What is common in common law? The common law are those laws which were applicable to the Britishers. This was, as far I can recall it, this was something
prevalent in the Britishers, which they imposed throughout their dominions by certain modification or alteration. It was not Okay. codified, but based It on was the not judicial. codified, Yes, and still it was in practice without being codified. yes. Is there an example in India? Something that must have emanated from common law? As I can recall right now, the law of tort is something which is drawn from the common law. The administrative laws are also not codified, but it exists on the basis of the principles. So, law of tort, you said. Why do you think in Indian society a law of tort is still underdeveloped? Do you think that it is underdeveloped? And if yes, why? If no, why? Yes, sir, I agree with this statement. That the second question, sir, kindly. I was asking, you think it is underdeveloped? If yes, then what are the Yes. reasons why it is yet not fully developed in India? The reason behind the non-development of this law of tort is that the illiteracy, unawareness about the law, existing laws, and the delay in the result of the judicial pendency and delay in the results of the cases. Further, the attitude and the mental status of the people presently in the Okay. So in law of tort, yes, carry on. wherein the people thinks that this silly thing doesn't matter, or instead of going to the approaching to the court, it will lose their money as well as time. Okay, that is also one of the reasons that people for such kind of crimes, they do not find it on a scale of good risk and reward ratio, so they don't approach the court. कि कोई फायदा नहीं है, उससे ज्यादा तो पैसा चला जाएगा टाइप से. Okay, tell me, under law of tort, you must have heard a very popular term that is called vicarious liability. Yes, sir. I have heard. Has Indian jurisprudence made certain alterations to this concept? Vicarious liability. Yes, sir. It's Okay, so Yes. what has happened in a particular case? You know the name of the case that is known for this? sir. I can recall one of the case which was MC Mehta, where under the Bhopal gas tragedy was there, and oleum gas leak was there. It is also known as oleum gas leak. So, what is vicarious liability? Vicarious liability is something where under the person is liable not for his personal act, but of the act of the another. On the basis of And how has Indian jurisprudence changed it to absolute liability? Which element has been changed? the defenses which were available in a strict liability offenses? Exactly. And what were they? The defenses, sir, as I can recall right now, was the plaintiff's own fault, the inevitable accident, act of God. These were some defenses which were available. Other than this was also there, but these I can recall right now. These Okay. You were mentioned your area of interest as Indian Evidence Act, isn't it? So in Indian Evidence Act, if you see, the Evidence Act itself is a rule of law or is a rule of evidence only? It's a substantive law or procedural law? It is a rule of procedure. It's a rule of procedure. So this rule of procedure has to be followed by who? This is lex fori law, which is applicable to the forum. The courts
are bound by these laws. Okay. So on the basis of this, on the basis of the, what should I say, the strictness with which Evidence Act should be followed, is there a difference between judicial and quasi-judicial proceedings? Yes, sir, there is difference. The strictness in the law of evidence and the procedure is not there in quasi-judicial proceeding. They are bound by the law of natural justices and some of the law of evidences are there, but not all and every law of evidence is applicable to them. You are using this phrase natural justice. What is natural in that just natural justice phrase? Why it is called natural justice? Natural justice. Yes. Why it is called natural justice? Yes, it is called natural justice because it is presumed that in every civil society, irrespective of the territorial divisions, it will be applicable naturally to all the legal field, legal system. That's why it's called natural. It is the essence of every legal system. Okay. My final question is a situational question. Under which charges would you prosecute Karna if it is a Mahabharat case and you are from the side of the prosecution? Which charges you think will be applicable to Karna? Take your time. It's okay. Think about it. So in entire episode or in case of certain evidence? To say an entire episode, whatever comes to your mind, role of Karna in Mahabharata. On the basis of that, can we fix him? Can we fix him under some charge? The one incident, sir, I can recall is about the Cheer Haran, which was important there. There he can be charged for outraging the modesty of Draupadi. Okay. What did he do exactly? So recently, the court has also propounded that the silence amounts to supporting or admitting. They were silently supporting they were not opposing the wrong which was being done. They were capable to do so. And, recently, the court has propounded that Maunam Swikriti Lakshanam, whereunder the person is liable if he is silent on anything wrong is being done in front of him morally. Yes, doctor. Similar is the doctrine of acquiescence also, isn't it? So, final question, say, let's say, it emanates from this question. Would you like to also charge under some provision of the act? Would you also like to charge the Pandavas when they bet Draupadi? Yes, sir. Under present scenario, they can be charged for gambling as well as treating the woman as property. Discrimination. What is that specific charge where somebody can be prosecuted for treating a woman as a property? I'm sorry, sir. That's fine. That's fine. That will be all from my side. अनुज जी चैनलाइज करिए सर आवाज आ रही मेरी ना सर आ रही सर मेरी जा रही है हाँ आ रही है सर 2-4 क्वेश्चन पूछ ले पहले इनसे सर आप पूछिए श्योर अमित जी ये सर अभी जो चीर हरण के बारे में बात कर रहे थे इस पे आपको चार्ज लगाना है कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा आईपीसी का इस पे 354 और
354A or और defamation will also Again? be there. डिफेमेशन सेक्शन बोलिए, सेक्शन प्रोविजन. Yes, sir, defamation. डिफेमेशन कैसे होगा? Lowering the moral or the intellectual character of individual or diminishing the reputation of individual in society. Sorry, sir, I could not hear you. Sir, you are not audible. Sir, unable to get your voice. Sorry, sir. अनुज आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनुज जी मॉक जो है सेंटर से लिया करिए आप. So let's analyze his interview. Amit, you are good. I'll rate you a very good candidate. Knowledge-wise, you have done your work, your homework. I'm happy. बस कुछ एक जगह पे you are taking a lot of time to show that you actually know. That's not good, which you can improve. That homework is required. Sometimes in response to certain questions, actually you know the answer, but you first wander about here and there, and then you come to the point after the examiner or after the panelist gives you a clue or something. So better to take that extra time right before answering. Take your extra time. If you think it is going extraordinarily long, you seek their permission also after 4 or 5 seconds. Sir, can I have a few moments, please? That is okay. लेकिन इधर उधर ऐसे करके फिर आने का जरूरत नहीं है. मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दूंगा. तो पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा धैर्य रख के सुनने के बाद सवाल को थोड़ा आराम से शुरू करिए. जान लीजिए पहले अपने दिमाग में कि आपको बोलना क्या है, या आप गेस कर लीजिए कि ये मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं. तो वो अवेयरनेस होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका जो हो जाएगा. दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्चुअली जो फिलोसॉफिकल, कंसेप्चुअल नहीं बोलूंगा, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी आप भी सीख ही रहे हैं जिंदगी से, लेकिन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा और मेच्योरिटी आपके जैसे कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है. यू आर अ वेरी मेच्योर कैंडिडेट, आई विल से, आई विल रेट यू वेरी हाई. सो इसलिए फिलोसॉफिकली थोड़ा सा और अपेक्षा हो जाती है कि नहीं इसमें कैसे गलती कर सकता है, या ये कैसे उसको उसमें कैसे आप जो सबसे मेन लड़ाई ही है कि भाई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक्स भला कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा मन में आता है. ठीक है, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू वंस शेयर ऑफ मिस्टेक्स, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्पेलिंग दैट ट्रूथ. लेकिन ये जो है, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, कैरेक्टर के, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. जैसे आप बोले तो सही कि हमारा कॉन्शियंस ऐसा है कि भाई हमको लगता है कि आई कैन नॉट, माई कॉन्शियंस, माई जॉब कैन नॉट बी ड्रिवन बाई मॉनिटरी कंसिडरेशंस, दैट इज माई फिलोसफी. ये आप ज्यादा बोलना चाहिए था. आपको बहुत मन होता है कि प्योरली मॉनिटरी, उससे नहीं हम ड्राइव होना चाहते सर कि फीस के लिए कुछ भी कर जाएं, ऐसा हमारा नहीं है टाइप. हालांकि इससे बेटर जवाब पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये भी कहना चाहते थे तो यही आपको कहना चाहिए था, रादर देन ड्यूटी रिजल्ट. क्या है कि पब्लिक सेक्टर में भी
रिजल्ट ओरिएंटेड होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। बस ये है कि ड्राइविंग फोर्स किसी का प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल इसके लिए फ्रेज है कि प्रॉफिट ड्रिवन या प्रॉफिट मोटिव के साथ ही ऑब्सेस्ड रहे आदमी, ये पब्लिक सेक्टर में ड्राइविंग फोर्स की तरह काम नहीं कर सकता, ये नहीं करता है। इसीलिए वो जो है वो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर ही मार्केट फेल्योर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इकोनॉमी में देखिए तो जहां मार्केट की पहुंच नहीं है वहां पे पब्लिक सेक्टर काम करता है ज्यादातर जगहों पे, ठीक है, जहां मार्केट की फेल हो जाता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ड्यूटी और ये सब का लाने के बजाय आप सिंपल सा बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई आई वांटेड टू ट्राई टू चूज अ करियर in which duty is the predominant driving force and not profit motive। फिर आपसे इस पर काउंटर क्वेश्चन होगा कि आपके हिसाब से क्या प्रॉफिट मोटिव गलत है? तो आप बोलिए कि नहीं, जब तक साधन और साध्य दोनों की शुचिता बरकरार है तब तक प्रॉफिट मोटिव में कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी यही तो कहते थे, तो आप इस्तेमाल कीजिए अच्छे वर्ड्स। लेकिन जहां पर साधन और साध्य दोनों की शुचिता अधिक बनी रहने की संभावना मुझे इसमें लगी, इसलिए मैं ये करियर एक्सप्लोर कर रहा हूं मेरे अनुभव के आधार पर। और इस बात की पूरी संभावना है सर कि मेरा ये जो नोशन है, दैट नोशन में इज सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट एज आई लर्न इन माई लाइफ। आप फिक्स्ड नोशन पर मत रहिए, मैं आपको वही बार बार बोल रहा हूं। आपको शायद लगा कि हम आपका कन्विक्शन जानना चाह रहे हैं वकालत को और लॉ को लेकर, नहीं। एज अ पर्सन यू हैव टू बी ओपन। यस, मैं गलत हो सकता हूँ, किसी भी टाइम पर हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि because what I decide is based on certain notions and certain perceptions that I have accumulated till now, and I cannot claim that I have seen everything. So life has much more to offer, and depending on the dynamics of life, I may overturn my decision. तो वो कभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कल को हमको पता चलता है कि हम अच्छा टीचर बन सकते हैं, तो हम छोड़ के सब टीचिंग करेंगे, दैट इज ओके। तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा तैयार रहना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो जब साधन और साध्य की शुचिता का शब्द जो है प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहां पर आपसे वही काउंटर क्वेश्चन होगा जो सर ने किया कि आपके हिसाब से जो बाकी वकील लोग कर रहा है वो सब ऐसे ही है, जो उन्होंने शुचिता त्याग दी है। तो बोलिए नहीं, लेकिन सर उन्होंने जो है एक संतुलन बना रखा है, किसी प्रकार से संतुलन उन्होंने बना रखा है। कुछ मौके ऐसे आते होंगे उनके जीवन में, मेरा ऐसा अनुमान है। लेकिन मैंने सोचा कि यदि मेरे पास संभावना है तो मैं ऐसी चीज के लिए ट्राई करता हूं जहां पर मुझे कॉन्शियस से कंप्रोमाइज करने की संभावना भी न रहे, या कम से कम रहे, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। हालांकि यह भी याद रखिए कि इसमें एस्केपिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें एस्केपिज्म नहीं आना चाहिए कि जो है इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है कंपटीशन को या वहां के चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि यू शुड गो अहेड विद समथिंग व्हिच हैज मोर कॉन्शियस ओरिएंटेड एक्सपोजर, तो इसलिए आप ट्राई कर रहे हैं। बस इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है, बट आप मतलब कहने का अर्थ क्या है, खाली बोल के नहीं रह जाना है। अगर उस पर बात होने लगे तो पूरा 360 डिग्री आप उसको लॉजिकली हर स्टेप पे बीट कर ले जाए कि नहीं, आपका ये ओरिजिनल थॉट है भाई, ये कोई सिखा पढ़ा या अभी इंटरव्यू के लिए 3 दिन पहले बनाया हुआ आंसर नहीं है। एक्चुअली मेरे मन की यही दशा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ये आना चाहिए फीलिंग। अगर वो फीलिंग आएगी तो नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। और एज एन एपीओ इस पर एक काउंटर क्वेश्चन के लिए आओ, यू शुड बी रेडी फॉर वन मोर काउंटर क्वेश्चन, दैट इज कि डू यू ऑल्सो विजुअलाइज अ सिचुएशन एज एन एपीओ वेयर यू मे बी पुट अंडर प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज योर कॉन्शियंस। ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक बार एपीओ की प्रोफाइल देखिए कि उनका क्या काम है, कैसे काम करता है, कैसे पुटअप करता है, उसका रोल प्रोफाइल क्या है, और उस पर आधार पर अपना क्वेश्चन बनाइए फिर कि हाँ सिचुएशन हो सकती है। कोई एपीओ हो, उससे बात करिए कि भाई कभी ऐसा प्रेशर आता है, क्या आता है। तो अगर, हालांकि देखिए ये जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें बहुत ओपन होकर नहीं बोल सकते आप इंटरव्यू में, लेकिन आप ये बोल दीजिए कि सर इस सबसे अच्छा आंसर आप इसका अगर ये आए तो सबसे अच्छा आंसर ये है कि सर मेरा अभी एपीओ के एक्चुअल डे टू डे वर्किंग का कोई एक्सपोजर बहुत अच्छे से नहीं है, बस इनसाइड का एक्सपोजर मुझे नहीं है। जो कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत उनके काम का रिफ्लेक्शन दिखता है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करते होंगे, वो आपका आंसर हम नहीं जानते, हमको भी प्रोसीडिंग बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन आप समझ गए हमारी बात। तो आप ये बोल दीजिएगा कि हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर नहीं है। तो अभी उस विषय में कहना मेरे लिए जो है वो प्रीमेच्योर होगा सर। लेकिन एक बात के लिए तो मैं कन्विक्शन है मुझ में कि कॉन्शियस के ना कंप्रोमाइज करना पड़े, इसीलिए इस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं।
तो पूरे नैतिकता से डटे रहेंगे और कॉन्शियस से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे सर। बहुत साफ शब्दों में, सरल शब्दों में इस बात को कहना चाहिए। दैट इज वन। ओके, देन आपसे जब पूछा गया कि व्हाट इज योर एज ओवर योर कंपटीशन, तो आपको पहले शुरुआत कैरेक्टर से करनी चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आप बताइए कि मैं जो हूं, मैं ऐसा मानता हूं, आई बिलीव दैट आई एम अ मैन ऑफ कॉन्शियंस और आई एम अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी सर, आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, आई हैव अ सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो इनके वजह से सर मैं समझता हूं कि मैं अच्छा करूंगा, और उसके साथ साथ if you I have a qualification which will assist me, I have an experience which will enrich the performance of my duties। इस आधार पे मैं ऑब्जेक्टिवली कहना चाहता हूं कि मैं जो एक अच्छा कैंडिडेट हूं, आई एम गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। हाउएवर इट विल बी a violation of principles of natural justice। आप ऐसे पकड़ो ना इसको, it will be a violation of principle disregard to principles of natural justice if I start judging others without having an opportunity to interact with them, without giving। अब तुम्हारा दूसरे के बाद ठेका थोड़े लिए हो तुम कि दूसरा कितना हुआ है, तो हम अपने कमिटमेंट के बारे में सर्वविनम्रता से बोल रहे हैं। and it will be against the principles of natural justice, with due respect sir, that I cannot judge the merit of others when they did not have a chance to speak before me, to interact with me। तो अपना हम बता रहे हैं सर, ये कई बार मजाक जो कहते हैं ना, एक ह्यूमर में चला जाएगा, एंड इट विल हिट, these things actually hit very hard। कि आपने सिर्फ लॉ पढ़ा नहीं है, आप उसकी प्रोसेस को जीते भी। सो आप दूसरे का थोड़ा ठेका ले सकते हैं, आप तो जानते नहीं कि कौन कितना काबिल हो। तो बोलो कि हमें इस पैनल में जो है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देन यू से सर कि आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ दिस पैनल, एंड इफ देयर इज अ बेटर कैंडिडेट देन आई एम टू fill this fill this post of public duty, then I will be a happy person that somebody abler than me, somebody more capable than me is occupying that chair and performing the public duties। साफ एकदम, इसमें कोई, ये सब क्या है, ये सब हिट वर्ड्स होते हैं और सबको हम लोग नहीं बताते हैं बात, लेकिन आपसे इंटरेक्ट करके ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा वाकई नैतिकता की तरफ जो है आपका रुझान है, आप बिलीव करते हैं फिलॉसफी में लाइफ के, आप बिलीव करते हैं थोड़ा बहुत मोरालिटी में, तो आपसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। सबके बस का नहीं है ये जवाब देना और वहां हैंडल कर पाना, और जब तक कि अंदर से वो आत्मा में कन्विक्शन ना हो। तो ऐसा लिमिटेड एक्सपोजर से प्रतीत होता है कि आप हैंडल कर ले जाएंगे शायद आंसर। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यू कैन से दैट वेरी वेरी रेस्पेक्टफुली, यू कैन मेंशन इट एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू से। कॉमन लॉ आपने बताया, लेकिन कॉमन लॉ में आपको बताना चाहिए कि सदियों से जो चला आ रहा है, इवॉल्व होता चला आ रहा है, जो ब्रिटिश का बात नहीं है तो ब्रिटिश उसके कॉन्टेक्स्ट में ही, लेकिन ब्रिटिश पर एप्लीकेबल है ये उसका डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस में कॉमन लॉ हैज इवॉल्व्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर कस्टम्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ मेकिंग। नॉन स्टैट्यूटरी जूरिस्प्रूडेंस इसीलिए कोडिफाइड नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हुआ लॉ नहीं है ये समाज में जैसे जैसे सोसाइटी में लॉ इवॉल्व हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो ये बात है, और बाकी लॉ ऑफ टोर्ट में आई एम सेटिस्फाइड मोर और लेस। ठीक आपने बोला, अच्छा बोला, और नेचुरल जस्टिस वाला भी आपने ठीक बोला। तो नॉलेज पे इसीलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा एक काम करो मिश्रा जी की, थोड़ा सोचो। ठीक है, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में सोचिए। आपने कई बार बोला कि आई मे नॉट बी एबल टू यूज द राइट वर्ड्स, आई एम नॉट एबल टू फ्रेम। तो ये नहीं नौबत आनी चाहिए, मेरा कहने का अर्थ है। ठीक है, ये नौबत नहीं आनी चाहिए वहां पर। आप कब है इंटरव्यू? 30 अक्टूबर को है सर। 30 जी, बहुत टाइम है आपके पास, और आपको एक देखते हैं सर की जैसी आज्ञा होगी। आप पहले तैयारी कीजिए। अब लाइन आप समझ गए, लाइन ऑफ स्पीच, लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस और डिसिप्लिन अपने समझ गए। आप ये समझ लीजिए, फिर सर की अनुमति होगी तो एक बार और आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा जैसा संयोग बन पड़ेगा। बट ओवरऑल आई कैन से यू आर अ गुड कैंडिडेट, यू आर अ गुड कैंडिडेट, आई विल से दैट्स माय फीडबैक। चलिए, शौर ने बड़े इनकरेजिंग बात आपके लिए कही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि आपके उत्तर कई बहुत गलत थे। जैसे आप लगातार बोलते रहे कि प्राइवेट प्रैक्टिस में रिजल्ट का दबाव रहता है, ये आप नहीं कह सकते, बहुत गलत आंसर है ये।
इसका साफ साफ रेफरेंस अभी जब आप इस रिकॉर्डिंग को आप देखिएगा, आप इसको रिप्ले करिएगा, आप देखेंगे आपके सारे बात से ये इन्फ्लुएंस आ रहा था कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट. In the government job, there is no pressure on the job. This you want to say by your answer. You again listen it. This answer will reject you. Second, again you said the wrong thing about the criminals. This question has been asked by the Ram Jethmalani. Ram Jethmalani has used 2-3 answers. First, everyone is innocent till he is proved guilty. Second, he has quoted the case of Balbir Singh Indira Gandhi Hatyakand. He said he got relief from the Supreme Court. Had I not intervened, a person who was not guilty, who has not committed any crime, was unnecessarily punished. Third, he said, you analyze the history of the case records. You see the case records. A number of people are being implicated without committing any crime. Who will help them? Third, he said, state is an oppressor and the lawyers like us for the common people. Bola, if we are not here, who will help the person? State may lodge any case. Fourth, he said, you analyze the conviction rate. If conviction rate is dismal, who is responsible? Your answer of this is not correct. In these answers, you can't be succeeded there. You try to say these answers on the conceptual basis. You need to see a lot कि मैं answer क्या करूं. I repeat a number of times to all of you. Your selection is more determined by your general answers rather than the hardcore law answers. It applicable to the IAS also, PCS also, PCS also, same with the APO also. I agree with you, sure, that your knowledge of law is good. I don't find any significant issue in that which you need to improve. But for the common answers, you need to improve. Why you have not attended any of the mock happened here? Because this question, why you want to become APO, has been asked a number of times. If you are not sincere for your future, then who will help you? Why you not attended the mock here? Why you not listen the mock? Because all the mocks are being posted on the chat. Why not listen? Any person, if listen only the mock happened in this chat, he will not commit a mistake at all. But I have not seen you in any time to be on the mock when mock was going on. First, you need to have a sincere. I am very tough on you. Shaur was very liberal. Shaur was encouraging you. I appreciate his effort. But I'm very tough on you because you are not a sincere aspirant as far as your history is going on. Why you not join any mock? I'm sorry, Not sir. join a single mock you join. Sometimes you appear, then you log off because right now it's technology is explainable to everyone. अगर आप सारे mock सुन लोगे, आप कौन मिल जाएंगे. I'm not worried about your knowledge part. You have good knowledge, but I'm worried your general conversation answer. आप APO क्यों बनना चाहते हैं? आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? The private practice versus a person who is doing a private practice. For him, it is a very important question. The why you want to join APO when you're doing the private practice. You can't run down the private practice. You have run down the private practice by saying that in private practice I have to produce a result. The natural corollary, you are not concerned with the result. आप सुनना ना, आपका आंसर सुनना. These are the few facts. I'm a little harsh on you. The reason being, I want to improve you, and it is a very sincere. It is not only for you. All the aspirants who are listening this, they should take care of this. As Shaur said, Shaur wanted to improve you. We'll try to repeat your mock because I want to see your selection. Right now, you are not going to be selected by this performance. You need to improve it. आप ऐसा करो, जितने आप चैट पे जाओ, आप चैट पे हो ना, you listen Yes, all sir. mocks. You listen all mocks Okay, sir. I will go. and through it. see. और उसको नोट डाउन करो. जितने मॉक्स में जितने सवाल पूछे गए, उस सवाल को लिखो, उस सवाल को एक्सटेंड करो.
You are a good candidate, you have enough potential. You may be selected, but you need improvement. Thank you. सर कुछ और कहना है? हाँ सर जी सर, एक चीज की इनको समझाना जरूरी है कि होता क्या है कि गुड कैंडिडेट इज नॉट गुड इनफ, ये लाइन जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ओके, और वो पैनलिस्ट जो होता है जहां पर आप फाइनली वेयर यू विल अपीयर, एनी पैनलिस्ट फॉर दैट मैटर, इवन फॉर मॉक इंटरव्यू, जहां भी आप आते हैं, तो दैट एलिमेंट ऑफ योर जर्नी 10-20 सेकंड 25 सेकंड में पता चल जाता है। फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही आपके जर्नी के बारे में, योर बॉडी लैंग्वेज, योर डिमीनर, दैट बिट्रेज एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी। Journey by journey, I mean which kind of a person you are, which kind of a person you have become in the process. Sincerity आपका झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, एक ना एक चीज में, ठीक है, ऐसे होगा। In one thing or the other, your casual nature that will come up. You can't help it. वहां पर possible नहीं आपके लिए नाटक कर पाना। So if I was not aware of the background, and that is why I did not judge you also for the sincerity aspect. लेकिन आप कितना भी वो कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका वो जो चीज है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज सरप्राइजिंग, इट कम्स इन सरप्राइजिंग वेज एक्चुअली। इफ यू से सर ने उसी पॉइंट को क्यों वो पकड़े रहे शुरू से अभी तक भी उसी पॉइंट पर क्यों बोल रहे हैं सर, देयर इज अ रीजन, बिकॉज दैट इज द एस्पेक्ट विच रिवील्ड द डिफिशिएंसीज ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट इज द आंसर। जिसमें आपने बोला कि प्राइवेट प्रैक्टिस में तो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, और उसी को क्यों सर बार बार बोल रहे हैं? क्या और भी आंसर नहीं है? और भी आंसर हैं, बट दे डू नॉट टेल अबाउट द डेप्थ ऑफ योर कैरेक्टर एज मच एज दैट आंसर डज। तो वो कहीं ना कहीं बोलता है कि नहीं भाई ठीक है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो, लेकिन ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। दैट इमीडिएटली टेल्स अबाउट यू कि हमसे ज्यादा ये सब ज्यादा हबड़ तबड़ में नहीं कर पाएंगे भैया, हम इतना स्ट्रेस लेकर नहीं रह पाएंगे। दैट काइंड ऑफ पर्सन नोबडी रिक्वायर्स। इनफैक्ट मैं आपको, सर ने ला ही दिया है, संदर्भ ला दिया है, तो मैं 2 मिनट में बता के चलता हूँ। एक्चुअली समटाइम्स इट फील्स कि इट इज द अदर वे राउंड। एपीओ ओपीओ जैसी जगह के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, एकदम जो एकदम कचकचाया हुआ हो, जिसे कहते हैं जो पब्लिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें फेथ तभी पैदा होता है जब इस साइड में वैसे लोग हों जो एकदम उनको कुछ नहीं, उनको बस रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैकेनिकली काम करते हैं जम के, और जो है एकदम मैनेजमेंट के सारे फंडा जो अप्लाई करते हो अपने काम में, ऐसे लोग की एक्चुअली जरूरत है। तो वो वाकई सुसाइडल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एपीओ का बात करते हैं ना, तो अभी आपको यहां से जरूर लग रहा है, हमने हल्का सा हिंट किया, लेकिन हम भी क्योंकि ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो डिसऑनेस्ट जवाब नहीं दे सकते थे, हमको भी नहीं मालूम। लेकिन एक्चुअली इधर कॉन्शियंस का कॉम्प्रोमाइज कम नहीं है, यू डोंट नो, बहुत तगड़े लेवल का कॉन्शियंस का कॉम्प्रोमाइज होता है हर जगह, इस साइड भी। तो दैट इज इन एनी केस दैट मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, एज आई टोल्ड यू, कि देना ही है तो ठीक है, वरना दैट मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। वो सबसे बढ़िया आंसर नहीं है। बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छी चीजें हैं जो पब्लिक जॉब में होती हैं, उसमें शर्माने का क्या है? अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ जो है वो सोशल रिस्पेक्ट उससे मिलती है, करियर प्रोग्रेशन अच्छा मिलता है, व्हाई नॉट? ये तो जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। इसके बजाय आप ऐसा चीज बोल दीजिए जिसमें आप फंस जाए, दैट्स नॉट इट। इसीलिए हमने जो दबे शब्दों में कहा कि यही मिस्टेक कर गए जो सॉरी बोल रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ऑन सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप क्या है, आप स्केपिस पे आ गए कि साहब मेरे को काम नहीं करना है। आप क्या साहब मेरे को काम नहीं करना, आपका कन्वर्सेशन आंसर आ रहा था कि साहब मैं कामचोर हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कराया जाता है, अगर हम केस नहीं करेंगे तो मेरी नौकरी, कोई हमको केस नहीं देगा। यहाँ कुछ करे ना करे, हमको तो यार काम मिल गया है। If you analyze your answer coming out this, if you answer like the Shor is saying, कि सर sense of security चाहिए, I will do my job best, I want sense of security. Yes sir. और लास्ट के 2 पॉइंट ध्यान रखिए, जो कि सही मायने में सरकारी नौकरी को हम लोग भी वही कर रहे हैं। मैं आपको अपना उदाहरण, अपना अनुभव बताता हूं। मैंने क्या समझा सरकारी नौकरी क्या है। सरकारी नौकरी में जो स्केल ऑफ इम्पैक्ट है वो विजिबल से कहीं ज्यादा होता है। जो विजिबल, जो पैल्पेबल है, उसके बियॉन्ड ट्रेवल करता है। जब आप पब्लिक सर्विस करते हैं, पब्लिक ड्यूटी कोई परफॉर्म करते हैं, तो जो बेनिफिशियरी आपके सामने दिख रहा है ना, इससे कहीं बियॉन्ड जाता है वो, नंबर 1। नंबर 2, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे, जो कि मॉनिटरी नहीं होता है। दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि जो है, जिसका कोई पूछा वाला नहीं रहा, उसके लिए हम लड़े, जिसके लिए हम किए, कोशिश करिए, इसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग सरकारी नौकरी में आज हम लोग सब बने हुए हैं, वो मुख्य रूप से जो है बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये एक फोकल पॉइंट है जो होल्ड किए हुए है। वो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें आज नहीं पता चलेगा, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट होता है, बहुत ही पेनिट्रेटिव इम्पैक्ट होता है। जब आप
व्हाट यू डू कि सरकार के सरकारी तंत्र में, सरकार तो हमने चुना है ना, इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव डिवाइज्ड एंड वी हैव इलेक्टेड all the three components of governance that we have done this. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेथ पैदा करने वाली चीज है वो पब्लिक सर्विस होती है, समझे भाई? सिटीजन का जो फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विस के थ्रू पैदा होता है कि नहीं देखो इनको हम क्या दे रहे हैं, इनको तो हम कुछ दे नहीं रहे बेचारे, फिर भी हमारे लिए मरे जा रहे हैं मिश्रा जी. दैट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर विच वी वर्क. ओके, तो बहुत ब्रॉड सोचिए, छोटे उसको नैरो मत करिए. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. Correct, thank you.